बड़ा दिसला good evening everyone, welcome to OAS HUB. I on behalf of everyone here welcome you all for the first session today is the first session, right, in this new batch. So we are beginning, we are opening the innings, right? So on behalf of everyone I welcome you and I expect that you and us, all of us, work together in achieving your success. Your success is our success, yes or not? So if you do not work and if we do not work together, then it's of no use. Great. So that is what we need to do. We have to work together. This is kind of a relationship which we will learn, which is known as a symbiotic relationship. You must have learned in science. Yes, helping each other, symbiosis. Yes or not? Kiyodu kotla science padauche boliye hona nahi biology re thila. I will be taking up portion of your geography at this point in time. So today, do you want anything else other than geography? I'll just give you a small 10 minutes introduction of what all you need to study for your preparation. Then we will come to our subject in itself, because this is the first class, this is an introductory class. We will be talking about geography's introduction, geography's basic concepts. Other than that, we will also be understanding what needs to be read with regards to each subject. Okay? Lalit sir will also explain when he comes over. So everybody has different perspectives. So let us take all the perspectives and let us start inculcating. Okay? In case of geography, we need not read too much. It is more about understanding rather than reading. So you have to read 11th class NCERT. That is all. There are two books, India and Physical Geography. ये दो किताबें हैं, इन्हीं दो किताबों को आपको पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ नहीं. इसके अलावा एक और किताब है जिसको हम बोलते हैं जीसी लियोंग. जीसी लियोंग किताब आप खरीद लीजिए. जीसी लियोंग किताब में क्या है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं. So in order to understand each subject, what you need to do, you have to understand diagrammatically. Yes. So to understand those diagrams, this book is enough. Any doubts till now? Anything? Or you are studying something else? Where are you studying something else? Online people? Where are you studying something else? बस इतना ही पढ़ना है. ठीक है. हिस्ट्री के लिए modifying, you can read the spectrum. It's a good book. You can read Bipin Chandran, but I suggest spectrum. और आपके लिए जो किताब है एंशिएंट के लिए एक आर.एस. शर्मा किताब है, आप वो भी पढ़ सकते हैं. मिडिवल भी वहीं पे है एनसीईआरटी की. मिडिवल के ऊपर एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री है जिसको हम बोलते हैं टॉकिंग हिस्ट्री. टॉकिंग हिस्ट्री आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे. राज्यसभा टीवी का, आरएस टीवी का पुराना डॉक्यूमेंट्री है जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं. आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा. उसके अलावा एक 12th क्लास का एनसीईआरटी है, आर्ट एंड कल्चर, ऑरेंज कलर की किताब है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके लिए आपको 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक है, 12th पॉल साइंस प्लस
there's another series called प्रधानमंत्री on an YouTube. ये दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ओके तो ये किताबों को आप देख सकते हैं। पहले आप कहीं थोड़ा इजी ज्ञान आ जाएगा, ये प्रधानमंत्री वगैरह आप पढ़ेंगे तो ये सब भी ठीक लगेगा। तो स्टार्ट डेवलपिंग दोस थिंग्स, थोड़े अच्छे अच्छे। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ये प्रिपरेशन ऐसा है वेयर इन यू कैनॉट स्टडी ओनली बुक्स, you have to accumulate everything that you have got from your life. It's a preparation of life, not books. तो जोटी जोटी जहां जहां मिलुची प्लीज स्टार्ट टेकिंग दैट, ठीक है। सो वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। आपके सर जो पढ़ाते हैं पहले उसको पढ़िए, बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन टू टीच यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यस, because many of us have absolutely no idea about how economics functions. इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारा कोई आइडिया है नहीं, तो जो हमारे टीचर बताएंगे वो ज्यादा अच्छा चीज है, तो वो पढ़ेंगे। उसके साथ हम एक चीज है जिसको हम बोलते हैं संजीव वर्मा, एक किताब है, आप संजीव वर्मा एक बार पढ़ लीजिए। आपके सर जो पढ़ाते हैं उनको पढ़िए, उसके साथ संजीव वर्मा पढ़िए। ये दोनों पढ़ने पर काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा पेपर पढ़िए, योजना पढ़िए, योजना इज अ मैगजीन, कुरुक्षेत्र, ये दो मैगजीन 100% पढ़िए। दीज आर वेरी गुड मैगजीन्स, यू विल गेट लॉट ऑफ डेटा फॉर योर आंसर राइटिंग। रीड दीज थिंग्स डिलीजेंटली, रीड दीज थिंग्स रिलीजियसली। एगुड़ा पढ़िले बहुत डेटा तुमको मिलिबो। इसको बोथ करंट अफेयर्स रही तो इकोनॉमिक्स अच्छी, इकोनॉमिक्स कौन की पॉलिटी कौन, इट्स ऑल करंट अफेयर्स, राइट। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा कॉल्ड करंट अफेयर्स। आई विल बी टेकिंग अप करंट अफेयर्स, संडे संडे क्लास होता है, आप लोग आते हो। बट उसमें क्या आता है, टॉपिक्स आर व्हाट, टॉपिक्स आर ऑल इकोनॉमिक्स रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड। तो वो है बात, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट इज नेक्स्ट? पॉलिटी। पॉलिटी लक्ष्मीकांत यू रीड, व्हाटएवर सर इज टीचिंग दैट यू रीड। यस, ये दोनों पढ़ो और पेपर को अच्छे से पढ़ो। पेपर में क्या दिया है, द डायनामिक्स ऑफ पॉलिटी, एक आर्टिकल के ऊपर दिया है, उसके एप्लीकेशन कैसे है पेपर में आप पढ़ रहे हो। तो आप सर जो पढ़ा रहे हैं उसको स्टैटिक पार्ट पढ़ो, उसके बाद सर जो बताते हैं उसका डायनामिक पार्ट्स पढ़ो, उसके बाद पेपर में आपने एक आर्टिकल पढ़ा उसके साथ कोरिलेट करो। सो दैट इज हाउ यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स। एक चीज से आपका यहां पे प्रिपरेशन नहीं होगा, आपको मल्टीपल चीजों से आपका प्रिपरेशन करना है। सार पढ़े बे, सार पूरा कथा सुनिबो कि हाँ ये आर्टिकल विषय सर एगुड़ा एगुड़ा कही थिले। यस, स्टैटिक चीजें बिल्डअप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पेपर में आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उसी आर्टिकल के ऊपर, जो आर्टिकल सर आपको पढ़ाए उसी आर्टिकल के ऊपर आपने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ लिया, तो तुम्हें ताकू या सहित कोरिलेट करिवो। हाँ ताले गोटे कौन स्टैटिक प्लस डायनामिक पार्ट आपनकर इनकलकेट हे गला। दैट इज हाउ यू नीड टू बिल्ड अप। आ गोटे धीरे धीरे हबो, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड एट द बिगिनिंग। धीरे 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 किछि भी केबे प्रॉब्लम हेले एडी सर रहउचंती, आमे माने अछु, जेते बेले जहा डाउट हबो तुम आसी पचार, किंतु फ्रस्ट्रेटेड हबो। प्रिपरेशन लॉन्ग हॉल प्रोसेस, एटा गोटे दिनर प्रोसेस नो कि तुम गोटे दिन भाबो काली पंडित होई बाहर जी, नो। हाँ ना नहीं, there was a great saint, a sage, who had written one of the great books called Ashtadhyayi. Yes, his name was Panini. संस्कृत कौन सा कहते ग्रामर ऊपर। तो ही वाज अ फूल ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, मूर्ख थे। तो सी देखिले कि गोटे कूअरे
रस्सी घसी 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 उस पत्थर में लकीर क्या, उसमें छेद हो गया था। तो ही थॉट कि अरे मैं तो गधा हूं, अगर मैं भी परिश्रम करूंगा तो मैं भी, अगर ये रस्सी इसको चेंज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर। देन देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन पाणिनि। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हें तो टिके परिश्रम करिवो ताले आराम से हो। देखो क्लियर हबो कि नहीं सेटा मु केई गारंटी देबी, किंतु तुमको दुख तो रहिबोनी कि भाई मु क्लियर कर मु पढ़िनी बोली की। ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं प्रिपेयर नहीं किया। You have to give your 100%, let God decide your fate, है ना नहीं? So this we completed what polity। और क्या सब्जेक्ट है? आउ तो किसी ने साइंस एंड टेक सब पेपर रे आसीबो। These are all paper related, please read। हाँ साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सब आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, शायद वीकेंड्स को आते हैं। प्लस पढ़ाएंगे भी, कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ाएंगे ही, उसके साथ पेपर में उसका डायनामिक्स आता है, that you need to understand। Other than that, you have ethics, internal security, everything will be taught। These you need not study from books, just follow what is being taught in the class and newspaper articles which are associated with that। ठीक है, हमको इतना ही करना है। This is not a difficult process, but yes, it is a long and tedious process, that is all। आपको धीरे 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 हर रोज एक एक ईंट के ऊपर डालना है। सिर्फ मैं कहूँ ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, same your Rome will also be not built in a day, it will take time। And my request to everyone, since the organization is working hard for you, it is trying to provide you everything that you want, हो ना नहीं? They are providing you, और तुम मानकर ड्यूटी कौन? To respect the hard work of the organization। For that you have to study। You will study, you will have doubts, you come with doubts, you come with queries, people will address your queries, हो ना नहीं? इतना ही है बस। That is all we expect out of you। Anyone any questions? हाँ हाँ इंग्लिश ओडिया पेपर हुए यार। इंग्लिश तो तुम पेपर पढ़ुच, ओडिया भी पेपर पढ़ो, लिखा कौन? दीज आर क्वालिफाइंग पेपर्स, यू कैन राइट। ओके, दैट need not be a problem, that can be done by yourself। I have no idea about Odia because I do not know how to read and write Odia। तो मु कौन कहि तुम से? यस, तो सुनो एटा है गला या बियॉन्ड आउ किछि कार को सब्जेक्ट रे आउ किछि डाउट अछि कि किछि नै? जानी स्टार्टिंग she asked a very good question कि sir how do we approach the newspaper at the beginning? At the beginning the problem is you do not have any idea। भाभी ने गोटे टॉपिक पढ़िल तुम अरब इजराइल वॉर ऊपर गोटे आर्टिकल दे देछन, तुम तो किछि भी जान न था ऊपर किछि कोन अछि, तुमको सेटा कॉम्प्रिहेंड करबा को तुमको टाइम लागि जिवो। तुम ता रिलेटेड जहां भी डॉक्यूमेंट्री अछि गोटे देखिवो। यू हैव यूट्यूब इज अ फैंटास्टिक एवेन्यू। हम गलत चीजें देखने में लग जाते हैं, अदरवाइज वहां पे बहुत चीजें हैं देखने के लिए। सबू टॉपिक ऊपर तुमको मिल जाव किछि ना किछि, बट डोंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ watching nonsensical videos of multiple educators। प्लीज डोंट डू। जहां तुम सर माने एटी पढ़ाउछन्ती सेतिकी पढ़ो, ता बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट्री वगैरह आपको कुछ मिलता है वो पढ़ो। अदरवाइज प्रॉब्लम कौन हम देखो, सर गोटे जिनस तुमको कहले, भाभी सर तुमको सोशियोलॉजी गोटे जिनस कहले, तुम से ये आउ जन किसी गोटे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू कहला, तुम कंफ्यूज हो। तो व्हाट एवर योर टीचर्स गाइड्स आर टेलिंग यू हियर, मेक दैट योर पत्थर की लकीर, उसको पढ़ो। उसके अलावा एक्सेस आपको कुछ चाहिए तो आप इधर उधर से सोर्सेस से पढ़िए। अदरवाइज प्लेथोरा ऑफ सोर्सेस विल डू नथिंग बट मेक यू कंफ्यूज्ड, है ना? तापर फाइनली देखिए कौन पढ़ी कौन पढ़ी नहीं, कौन पढ़ी कौन पढ़ी, इसके चक्कर में खत्म, अटेम्प्ट बेकार।
Remember, people who clear the exam are those who keep the preparation simple. Do not complicate your own preparation. आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और सिंपल मैनर में पढ़ो. ठीक है एवरीवन, ऑल ऑनलाइन फेलोज, ग्रेट. लेट्स गो टू आवर सब्जेक्ट देन. ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड, मैंने आपको बता दिया. अब हम अपने सब्जेक्ट में चलते हैं. अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, आप क्या बताओगे? What will you say if somebody asks you the geography subject क्या है? How will you define this particular subject? Study of Earth surface, climate. Okay, what's your name? Akansha. What do you do? Preparing. हाँ. बी फार्मा. वेरी कोटी घर माने भुवनेश्वर तो. हाँ वेरी गुड. बोलो, अगर ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए बोले एक सिंपल टर्म्स में, डेफिनेशन तो वैसे किसी का भी डेफिनेशन नहीं है. हाँ हाँ, you can study from Lakshmikant also, you can study from NCERT also. Lakshmikant भी बहुत सिंपल मेरे मैनर है दिया जाए जी. Like when we were preparing, I have never seen NCERT till date. Okay, directly my preparation was from कौन सा कौनती Lakshmikant. In fact, your sir will also agree that we all हमें जमान सब हमारे preparation जो टाइम रखते हैं हमें direct लक्ष्मीकांत इज सिंपल, इट इज इजी, से किसी भी डिफिकल्टी नहीं. बट स्टिल द्वारा आपण पढ़िया को चाहिए, यू कैन स्टडी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. कौन ना ना खाली पॉलिटी कथा कहूँ. हाँ, एनीवन एल्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? आउ कार किछ क्वेरी अच्छी की पचार पचार, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके चलो ठीक. तो ज्योग्राफी अगर हम डिफाइन करते हैं, जब शुरुआत के लोगों ने उसको डिफाइन किया, उनको लगा कि ये एक फिजिकल फिनोमिनन के स्टडी है जो अर्थ से रिलेटेड है. सारे फिजिकल फिनोमिनन एसोसिएटेड विथ योर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, आपका बायोस्फीयर है ना, सबसे रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर, सारे रिलेटेड जितने भी फिजिकल फिनोमिनन है, जितने फिजिकल प्रोसेसेस है, उनका जो स्टडी है उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं. बट उसके बाद ज्योग्राफी चेंज होने लग गया. लोगों के स्टडीज को भी हम इंक्लूड, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी आ गए ज्योग्राफी में, where we started learning about economic geography, where we started about settlement geography, where we started about social geography, where we started learning about आपका demographics, population studies. तो geography as a subject slowly started to increase its stature. तो उसका जितना था, या जो आप सोच रहे थे कि खाली ये है वो कि साइक्लोन हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, ऐसे नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जो कथाटा मु कहली. सोसाइटी ऊपर ज्योग्राफिकल इंपैक्ट, डेमोग्राफिकल स्टडीज, तुमरो अर्बन प्लानिंग, अर्बनाइजेशन, दिस आर ऑल ज्योग्राफिकल स्टडीज. बुझपाल? सो वी कैनॉट डिफाइन ज्योग्राफी पर से, but we can say in a very very lucid manner that it is nothing but the study of man with the environment. Simple. Urbanization किए गला तुम्हें, घर किए गला तुम्हें, रोड इकोनॉमी तमे कि चलाउछ कहा ऊपर डिपेंड करछि, तमर आ रिसोर्स सहित डिपेंडेंट रहउछि. यस, सो इट इज मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, हाउ दे आर कोऑप्टिंग, कोऑपरेटिंग, कोएक्सिस्टिंग, एगुडा सब मिसई देले ज्योग्राफिकल स्टडीज आज का डेट में करि परिबो. ओके, तो वही है सिंपल टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में हम उसको ही लाते हैं. नाउ अगेन इतिस्मिता विल आस्क मी, सर ज्योग्राफी ताले हमें स्टार्ट केमिति करबा, हाउ आर वी गोना स्टार्ट दिस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ
geography. I ask a question, all of you. Geography is the study of forces. From the physical geography perspective, it is the study of force. I ask a question, how will you define force? Nah, pressure by no. Attraction between two bodies. Okay, online fellows, how will you define forces? Anyone? Go answer. Go. Nobody is judging you here. You can tell wrong answers. No problem at all. How will you define force? I told geography is a study of forces. How will you define force? Dita jinsara? Dita jinsara impact. Okay. Okay. Anyone else who will answer this question? How are we going to define forces? Geographical studies mein, I want you to understand geography from the perspective of forces. How are we going to define this? Listen. We learnt in our school days that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another. All of you know. ଯେତେବେଳେ transfer होची गोटे form ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ form କୁ, that manifestation is force. In this context, easy context, तम हाथ रे potential energy अच्छी, तम गालू को मत गोटे दबार अच्छी, then that I am transferring my potential energy through kinetic energy, force. तो एक फोर्स एक एनर्जी जब अपने आप को दूसरे फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, वो कुछ मैनिफेस्ट करता है. दैट मैनिफेस्टेशन इज नोन एज फोर्स. बुझ पाला कौन कहला कि किछ कहला कि आउ थरे कह दो. सुनो, I told that energy can neither be created nor be destroyed. वो आ रहा था. Your soul is a form of energy. Your soul, आपके अंदर जो है, that is soul. Yes, that is why in Sanskrit we say nayanam chindanti shastrani, nayanam dahati pavaka. Yes, you have heard this shloka, all of you. हाँ, पढ़ी ना पढ़ना, सुनी ना है. तब जेनजी वाला संस्कृत के जानो ना. So that is the thing. This soul is a form of energy. This form of energy is made up of around 32 types of different elements. That 32 types of elements is nothing but your 32 types of gods and goddesses you 33 types of gods and goddesses you worship. That is why we say 33 koti devi devata. Koti means types, and that each element, each type of energy is responsible to give birth to that soul. Which one? Similarly, whenever there is energy getting transferred from one form to another, it will manifest. It will show. दिसिबा तुमको कि सेटा होची. से जो दिसिबाटा, that manifestation is known as force. Okay, that manifestation is known as force in this context. तमे जो force पर unit area जो कहूथलो ठीक है पूर्व प्रेशर पर यूनिट, ये सब बात की बात है. एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. आप खुद सोचो मैं गलत बोल रहा हूं क्या. मुझ पर. So that is the force. And geographical studies per se have to be understood from the context of two particular types of forces. कौन? Two particular types of force. एक endogenic force and exogenic. ठीक है.
दो प्रकार के फोर्सेस है, एक है एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। तो फिर आपसे फिर वही पूछा गया कि आकांक्षा, हाउ विल यू डिफाइन एंडोजेनिक फोर्स? It may be that decides that acts in the body. Which body? Smith, tell me. Online fellows, can you tell me how will we define endogenic force? और endogenetic भी बोलते बहुत लोग। कहाँ भीतर है? हाँ, very good. So when we define the force, endogenic force, write down endogenic forces are those forces. Endogenic forces are those forces emanating, E-M-A-N-A-T-I-N-G, emanating from the interiors of the earth. Exogenic forces are the forces emanating from the exteriors. ठीक है, बाहर से आप। छोटू मत छुआ पचर दे आस्क मी, सर ये तो बड़ी सारे बकवास आपने कर ली, ये वो ये एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, ये सर हमको एक बात बताओ, क्लियरली बताओ, ये एंडोजेनिक फोर्स का कारण क्या है? Why do we have endogenic force? Before I explain endogenic force, I would like to explain to you one particular process. Just understand this process. लिभान देंगे मेरी रे एटा सुनो, I am explaining you a process known as differentiation. Differentiation. What is differentiation? Sir, d by dx of fx is differentiation. Right? You get it? All of you have studied mathematics, right? So this you must have heard. D by dx of, yeah, differentiation. How will you explain this term differentiation? Anybody ever heard of this terminology? सुनो, I'll give you a story. इसको अच्छे से. The earth was not built. There was कुछ भी बना नहीं था. जब कहीं पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, वही था. आपका गाना बजता रहता ना, कुन फाया कुन, उसमें फर्स्ट लाइन वही गाता है ना, कुछ नहीं था. Then there was an explosion known as the Big Bang explosion. सुनी था बिग बैंग? तो बिग बैंग theory में there was explosion. Why it was there, I will not talk about that because there involves concepts of science and technology, जिसको हम हिग्स बोसॉन बोल के एक बोलते हैं. हमारे ही साइंटिस्टों ने निकाला था उसको हिग्स बोसॉन. एक हिग्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे हिग्स फील्ड एक होता है. हिग्स फील्ड के साथ ये बोसॉन पार्टिकल जब इंटरैक्ट करता है, उसमें मास आने लगता है, स्टार्ट्स गेटिंग मास. तो एक टाइम में मास आने के बाद इतना मास आ गया, वो इट एक्सप्लोडेड. तब आपका जो है सिस्टम वो बन गया. सो नाउ सुनो, आपके लिए क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन हुआ. एक्सप्लोजन हेला माने तम भितर जो जिनसटा अच्छी, जो चिथड़े उड़ के गए हैं, वो गर्म होगा या ठंडा होगा? गरम हाँ ना, गरम होगा ना. गोटे एक्सप्लोजन ହେଇଛି, एक्सप्लोजन है कि जो जिनस गुड़ा बाहरी से गुड़ा कौन हबो? इट विल बी हॉट. यस. तो सोचो एक छोटा सा पार्टिकल गिरा है ऐसे,
जिसको हम आज बोलते हैं अर्थ. ओके, so what happened? There is a molten material which is existing. There is a molten material. That molten material will lose its heat today or tomorrow. धीरे 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 there will be loss of heat. Yes or not? Heat टा loss ही होगा ना. तो जब heat loss होगा, slowly it will start solidifying. अरे तुम्हें जितना लुहाड़ा नहीं कि लुहार बनौच, at one point in time it is totally like a liquid. हाँ ना नहीं? Then it slowly starts solidifying. When it solidifies, it takes some shape. ये भी वैसे ही. It cools and it solidifies. Huh? Then you get the shape of your earth. Okay, चलो. तो ये जो आपका अर्थ है, तो ऐसा है, जब कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले आपके लिए जो मटेरियल था, जो फटा था, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल थे. एक मटेरियल तो था नहीं, बहुत सारे जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा था, जो यार डेंसिटी सबुठु बेसी कौन से तळकु पळेबो, तो सबुठु तळकु पळेला तमरो डेंसेस्ट मटेरियल. It became the densest material. It became the core of the earth, comprising of nickel and iron. सबुठु dense. Right? हम पढ़ेला परे बनेबो. The बनेबो, I'll give you time. हला? Then what happened? उसके बाद जो ट्रांजिएंट डेंसिटी था, जिसका बीच बीच में डेंसिटी है, वो आके जमा हो गया वहां पे. यस, and a densest, it a transient density. इसमें आया आपका, जिसको हम बोलते हैं मेंटल, कंप्राइजिंग ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. तापरे लीस्ट डेंसिटी मटेरियल ऊपर रही गला. लीस्ट डेंस, इसमें आ गया आपके लिए सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम. ये आपके लिए हो गया क्रस्ट. Yes, this core is made up of iron and nickel, so it has lot of attracting power. Yes, so thermal gravitation is because of this, because of the pull of your core. तो सुनो, इसके अंदर से जब ठंडा होता है, that gas will always try to escape. गैस तो एस्केप करिए चेष्टा करिवो, तो गैस एस्केप कला, एस्केप करिकी अर्थ चारिपटे जमा हो गला. किंतु अर्थ कोर ग्रेविटेशनल pull is so powerful that it held on to the gases, and these gases formed your atmosphere. So this is how your earth was formed, through the process of differentiation. The densest material went to the bottom, nickel and ferrous, nickel and iron. The transient density material became silicon and magnesium, that became the mantle. But when I will teach you interiors of the earth, मैं इस हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा. ये स्कूल लेवल के लिए है. जब हम पढ़ेंगे, हम अलग हिसाब से पढ़ेंगे. तापरे the least density material became the crust. The gases which were escaping were held on by the gravitational pull of the earth, and that made your atmosphere. Everybody understood? Online fellows? Yes. Make the diagram. Write 2-3 lines. I hope everybody is understanding. Online people पूरा बुझा पड़ुची ना किसी असुविधा? Very good.
डिफरेंशिएशन, हेडिंग दबा डिफरेंशिएशन। मु बेसिक्स पढ़ाऊँ आज खाली बेसिक्स पढ़ेला परे ही तमरो मेन जिंस को जीवी। ओके हाँ कौन कहले आई कैन नॉट हियर यू यार पीडीएफ तो मु दे परिबिनी एडा मु बुझोची केमिति पीडीएफ देबी यार ओके you have to make diagrams whenever I make ppts I can share ppts with you in current affairs classes I can I share ppts you can take the ppts you get the ppts right I share it with them you can take the ppts from them not a problem okay बट यहाँ पे हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग है हम खुद डायग्राम जब बनाएंगे तब खुद हमको समझ में आएगा यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं रटने वाली चीजें नहीं ठीक है जी तो तुम्हें कौन जानी लो एबे तुम्हें जानी लो कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ a process known as differentiation wherein the earth has formed itself due to cooling and solidification but इसका मतलब क्या है हीट एनर्जी एस्केप कर गया है बट क्या सारा हीट एनर्जी एस्केप कर गया है नो अभी भी अंदर है हीट देयर इज स्टिल हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ सो फिर मुझे ऑनलाइन फेलोस दे आस्क्ड मी सर you just told 5 minutes back that endogenic forces are the forces which emanate from the interiors of the earth sir could you tell us the mechanism behind कि किस कारणवश ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस की उत्पत्ति होती है why do they get generated who will tell me जहां कहो कहो not a problem say something think and tell entropy what is entropy it is the randomness of a particular process yes what is the entropy gives free energy you must have read in your chemistry मु बुढ़ा है कि मन रहउछि तमय पर तमन मन रहउ yes tell me if somebody asks you what is the reason behind the endogenic force what will you tell कौन कहलो मा सुबिलानी मते heat हाँ सुनो when somebody asks me एटा बने देछो everyone what is the reason behind endogenic force sorry वीडियो पॉज हो जाइए ऊपर से बुलाओ रे उनको समस्त कर पॉज है ना जन कर बाकी माने देखी पारछो तो ओके तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम प्लीज एक बार अपने आप को निकाल दीजिए फिर रिजॉइन कर लीजिए एंडोजेनिक फोर्सेस और धर रीजंस आमे देखिबा it is first is called primordial heat second is rotational and tidal friction the third is radioactivity एक्सक्यूज मी पहला वाला मैंने आपको बताया प्रिमोर्डियल हीट
rotational and tidal friction, radioactivity. If somebody asks you कि भाई ये सब क्या है, what is this primordial heat, how will you define the primordial heat, what will you say? What is the meaning of the term primordial? No, good. It is present from the beginning of time. Beginning of time in this context means from the formation of earth. अर्थ जब से फॉर्मेशन हुआ है तभी से ही आपके लिए ये हीट प्रेजेंट है. दैट इज व्हाट इज नोन एज primordial heat. We learned few minutes back that earth was created due to the cooling and solidification of a molten mass. When it is cooling and solidification, that means heat was already there. Majority of the heat escaped. However, certain amount of heat is still present inside the earth from the beginning of time. That heat wants to escape, and that is the reason behind endogenic, one of the reason behind endogenic force. केते जण बुझी गला को ऑनलाइन पीपल? ओके, राइट डाउन, राइट. आउ थरे कहूँ सुन. Primordial heat, few minutes back I just discussed that the earth was formed due to the cooling and solidification of the molten mass. Yes, it was due to the cooling and solidification. जब cooling and solidification हुआ है, जब cooling and solidification हुआ है, that means heat was there. Huh? Heat was there. That heat escaped. However, majority of the heat is still present inside the interiors of the earth. That heat wants to escape. When it wants to escape, it will manifest itself as endogenic forces. Right now, primordial heat is the heat present inside the earth from the beginning of time that heat wants to escape resulting in the manifestation of कौन? Endogenic forces. Online people, every one of you understood? Yes. Great. सेठू अरे ऑनलाइन किए किए अच्छे ना गुड़ा आउ थे कहला मु भूली गली. गोटे 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 करी. हाँ, विनय सेकंड, शुभश्री थर्ड, रीमा, हाँ, प्रज्ञा, आउ किए अच्छे, रोजालिन. हाँ, पाँच जोर रे कौन खाइन गिरे, जोर रे को. बी कॉन्फिडेंट इन योर थिंग्स. मैं थोड़े ना तुमको खा जाऊंगा. आउ किए अच्छा की. हाँ, वेरी गुड. सुनो सेठू तमे गोटे गोटे रीजन जानी गल. देन समबडी आस्क्ड और कोई रीजन है क्या, और कुछ है क्या? तो फिर किसी ने बताया कि रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन.
तुम्हारा दिमाग आगे चला यहाँ पे रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन कहाँ, टाइड कहाँ से आ गया नीचे, तले तो समुद्र थोड़े ही अच्छी, ये टाइड कहाँ से आ गया, रोटेशनल फ्रिक्शन क्या है, कोई सोच के मुझे बताएगा क्या, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैन एनीबॉडी थिंक एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन? हाँ हाँ, तो सेठू कौन हम, मैं तो फोर्स के बारे में लिखा ही ना, मैं तो फ्रिक्शन लिखा हूं। सुनो, वो चक्की पीसे हो कभी, उसमें क्या है, बीरी बीरी, जब तुम पीस रहे हो उसको क्या बोलते हो, तो कौन किया है? वो जो ऐसे 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 करते हैं उसको क्या बोलते हो रे? घसी घसी, घसी तो गोबर इटा କୋଉ ପଟେ ତମ ଘର? ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିରିଟାକୁ କରୁଛ, ତମେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ କଲା ପରେ ଟିକେ ତଳଟାରେ ହାତଟା ଲଗେଇବ, it will be very hot. Why? Because of the friction between both the layers. So when we are talking about the earth is rotating, हाँ स्क्रीन शो करूनी, समस्त को करनी ना जानू करनी, इन एंड आउट, ओके मे बी, बाकी केते जण क्लियरली देखि, केते जण क्लियरली देखि पारछ, हाँ तो मे बी इंटरनेट इश्यूज थाई पारे, देखो एटा के रीमा मैडम को दिसु नथला कि, हाँ टिके आउट करके तापर इन कर दियंतु, मे बी दिसि जाई परिबो। तो तुम्हें जानिଛ कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, सब बड़ जिनस, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस जे, बट इट इज having different layers which are made up of different density material. तुमको एबे टिके सम पूर्व कही ना कि it is rotating over layers which have different densities. When it has different densities, don't you think there will be friction? When there will be friction, what will be generated? Heat. What will that heat try to do? It will escape. It will try to escape. So what will it manifest itself into? Endogenic forces. आई तुम्हें निजे तो कहूँ परा, मु थोड़े तुमको कहूँ, तुम्हें निजे लॉजिकल, यहां पे रटने का कोई चीज नहीं है, यहां पे सब कुछ हमको समझना है। आउ थोड़े रिपीट कर, द अर्थ इज रोटेटिंग ओवर इट्स ओन एक्सिस, when it is rotating over its own axis, what is happening? It is rotating with layers which have different densities. When it has different densities, there will be friction. When there will be friction, there will be generation of heat. When there is generation of heat, there will be attempt by that heat to escape. When that heat attempts to escape, it will manifest itself as एंडोजेनिक फोर्स। बस हो गया, लिखो, मेरी शक्ल मत देखो, लिख लो ना, लिखे भी डाकी देखी ना, यही तो, हाँ लेखा, द अर्थ rotates on its own axis with different density material. This rotation this rotation this rotation results in the
कौन जनरेशन ऑफ हीट, which attempts to escape, which attempts to escape this this manifests itself as another source of another source of another source of endogenic forces. ग्रेट, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? टाइडल. अब टाइड कहां से आ गया भाई? टाइड साफ कर देगा पूरा, एमती पूरा सफा कर दो, वैसा टाइड आएगा क्या? ये टाइड कहां से आया है? रीमा मैडम कहतु, गोटे ना मन रहीगला, आ गोटे रोजालिन कहले, आ गोटे विनय कहले, तीनटा ना मन रहीगला मो, बाकी ना भूलिगली. प्रज्ञा शुभश्री, हाँ. बोलो बोलो जी. टाइडल फ्रिक्शन कौन हो एठी? तुमको समस्त को जना अच्छी, when we learn about the interiors of the earth, आपको पता है, अरे किए कार गोटे म्यूट है नहीं, म्यूट कर दियो. When we learn about the interiors of the earth, हम ये पढ़ते हैं कि अंदर हमारे लिए एक मैग्मा चेंबर है जहां पे पूरा मैग्मा फुल है. मैग्मा लावा जो तुम अच्छी ना नहीं, इट्स कॉल्ड एस्थेनोस्फियर. व्हाट इट इज कॉल्ड? एस्थेनोस्फियर. तुम गोटे कथा कह, जिते बड़े तुम पाई मु पानी गरम करी, व्हाट विल हैपन? I will boil water for you. What will happen to the water? Will it be static or it will be mobile? Mobile will start moving. तो वो ऊपर भी इंटरेक्ट कर सकता है, अगर कोई लेयर रखे हो उसके साथ भी वो भी फ्रिक्शन जनरेट करेगा. करेगा कि नहीं करेगा? फ्रिक्शन जनरेट करके क्या ट्रांसफर करेगा? हीट. वो हीट क्या करेगा? सेम. तमर भितरे मु कहूची जेतले मैग्मा चेंबर अछि, मैग्मा चेंबर माने इट्स वेरी हॉट. दैट मीन्स द मैग्मा मूव्स इन अ वेवी पैटर्न बिकॉज ऑफ द हीट. गर्म इतना है तो वो मूव करता है. करेगा तो वो क्या करेगा? ऊपर भी उठे, नीचे गिरेगा. ऊपर वाले लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, नीचे वाले लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा. दोनों के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो क्रिएट क्या करेगा? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्रिएट करेगा तो फिर से हीट जनरेशन होगा. फिर से हीट जनरेशन होगा तो क्या होगा? वो हीट एस्केप करने की कोशिश करेगा. वो हीट एस्केप करने की कोशिश करेगा तो वो क्या मैनिफेस्ट करेगा? बस, वेरी गुड. ऑनलाइन फेलोज, अंडरस्टूड, डिड नॉट अंडरस्टैंड? ना आउथरे कहबी शुण, कहूच तुम्हें कहबा पूर्व ही मुझे जानीगली. When we talk about the interiors of the earth are made up of molten material. Yes, magma. पूरा interior, a certain portion. So when it is made up of molten material, the heat makes that molten material to move in a wavy pattern, like waves. Magma current we call it as. It moves this. ज़्यादा गर्म हो तो ज़्यादा ऊपर जाएगा. चार्ट अगर यस, जस्ट इमेजिन, दीज आर सिंपल थिंग्स. तो ऊपर वाले लेयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, नीचे वाले लेयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा. दोनों के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा? फ्रिक्शन फिर से क्रिएट होगा. फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा. हीट जनरेट क्या होगा? तो हीट निकलने की कोशिश करेगा. हीट निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? एंडोजेनिक फोर्स की तरफ मैनिफेस्ट करेगा. राइट इट डाउन.
अरे सतरे तुम फर्स्ट क्लास एटा काली स्टार्ट है बोलो काली ओरिएंटेशन है अच्छा ओरिएंटेशन कौन कहले तुमको OPSC Bhabatosh Sir କେମିତି କଣ step by step ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି names prelims names and ସବୁ वेरी गुड सर ताले कहि देछन सब जिंस तो ଆଜ୍ଞା बस ठीक अछि ताल किछ असुविधा फिर भी धर कार किछ डाउट रहि जाय तमे पचारि परबा आज भी मु किछ प्रॉब्लम नै मु कहि दे परिबे there is no problem here whatever doubts you have whenever you have be free and frank to ask your concerned faculty जोर रे को मते सुबुनी कुरुक्षेत्र देखो कुरुक्षेत्र भाविन 6टा कि 7टा आर्टिकल अच्छी ठीक अच्छे ना सबू एका भाया ही आर्टिकल सेम इट इज ऑन द सेम लाइन दैट यू हैव ऑल द आर्टिकल्स सेम विथ योजना सेम विथ कुरुक्षेत्र आप उसमें से चूज करके 4-5 पढ़िए दैट वुड बी माई सजेशन ओके सारा कुछ मत पढ़े बट पढ़िए आई विल टेल यू व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन माय second UPSC mains examination I was not studying this Yojana and Kurukshetra बिल्कुल नहीं पढ़ता था कोई फर्क नहीं पड़ा मैं पढ़ता ही नहीं I was getting marks around let's say 250 में से मेरे को इकोनॉमिक्स में आता था 70 या 80 मैक्स 70 to 80 60 to 80 लिख लो ये 2 बार का है this is not a bad mark I'm not saying that this is a bad mark. Then I thought how to improve my. So 1 year I studied from this Yojana and Kurukshetra. My marks skyrocketed to 107. Only because of the data which you get from this. These are the areas wherein you will get lot of data. कि लैंड होल्डिंग केते अछि एबे लोकंकर केते तमरो ग्रॉस सोन एरिया केते तमरो नेट सोन एरिया केते तम क्रॉपिंग इंटेंसिटी केते लैंड इंडिया रे फैलो पड़ जाय छी केते डेजर्टिफाइड हे जाय छी केते कोन कोठी कोन भाभी न एबे तम सोसाइटी तम सर सोशियोलॉजी पढ़ो तो भाभी न सोशल वेलफेयर रो भी किछ आर्टिकल से माने पीपल विथ डिसेबिलिटीज केते अछन तांकर प्रॉब्लम कोन सो ऑल दिस डेटा यू विल गेट देयर that is why I am asking you to read this particular magazines जोटा पांच सुबुनी हाँ तमें सबू सहित लिंक कर पारो इकोनॉमिक्स सहित भी लिंक कर पारो पॉलिटी सहित भी लिंक कर सोसाइटल स्टडीज सहित भी लिंक कर ज्योग्राफी रे भी लिख पारो सबू थिरे कर पारी ये डेटा हर जगह काम में आएगा बुझी पालो सो दैट इज द थिंग यू कैन डू इट ठीक है नेक्स्ट हाँ आउ कौन कौन एनसीईआरटी रे तुम्हें गोटे दीटा क्लास रही धरिकी पढ़ सबू पढ़ा दरकार नहीं एते धर पढ़िबो ताल तमर जेमति मु तुमको कहले 11th क्लास रही पढ़ ज्योग्राफी मोर देन सफिशिएंट बाकी तुम कंसर्न टीचर जी तुमको पढ़ाऊँ जो भी सब्जेक्ट से तुम जो सब्जेक्टा कहे तुम जो एनसीईआरटी टा कहे तुम से पढ़ ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो ज्यादा सोचने की कोशिश करो एनालाइज करो आज जी जिन प्राय एनालिटिकल जिन आम पढ़ले घोषिबार तो किसी ना आज तुम घर को जाइए अध घंटे खाली या ऊपर भाव खाली जस्ट गो होम थिंक फॉर half an hour about whatever you learned these things will be embedded in your brain for the rest of your lifetime मु तो किसी धरी की आसे नहीं have I brought anything मैं कुछ भी लेके आया कुछ नहीं तो फिर मेरे को कैसे मैं कैसे आपको बताऊं दैट मीन्स कहीं तो घुस के है यू हैव योर कॉग्निटिव मेमोरी वेयर इन यू हैव माल मसाला सबू रखीच फालतू जिनस बहुत रखीच तमें तो यहीटा कहीं रखी पारिबनी मेरे दिमाग के अंदर आज के डेट में भी 3 टेराबाइट का गानों का लिरिक्स है उसको मैं हटा दूंगा तो और भी पढ़ाई घुस जाएगा पर मैं हटा नहीं पा रहा
तुम्हार भी केवल किसी नॉनसेंस पसिकी थियो तम मुंडरे आई डोंट फॉरगेट लिरिक्स पुराने 90s के गाने 2000s के गाने माने सबके लिरिक्स मेरे को याद है एटा कचड़ा ना मुंडरे पाठ भी सेमती इंटरेस्ट थिले तमरो ऑटोमेटिकली पाठटा भितर को पसि जीवो you just have to think that this is the best thing in your life you have to study एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ये मत सोचो आप पढ़ रहे हो बस ये सोचो because if you think that you are studying for the examination it will create an unnecessary pressure on you केबे भी भाबियन त परीक्षा पई पढुछ रीमा मैडम भाबिबे कि मो छुआ मान को पढेवा पई मु पढुची जी गोटे जी सर जने कहले कि मु पढ़ौची 11 12 का मु छुआ मान को पढ़ेवा पई खुशी रे पढुची तो ये सब करके अपने आप को डाइवर्ट करो एग्जाम के बारे में सोचना नहीं है आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे ये सब्जेक्ट समझना है दैट इज ऑल कीप दैट प्रोसेस नहले तमे से जो प्रेशर भीतर बुड़ी जीवो एंड दैट प्रेशर विल क्रीप इन एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाफ ऑफ द स्टफ मैक्सिमम पीपल फेल इन दिस बिकॉज ऑफ प्रेशर ओनली तो डोंट वरी ठीक अछि अरे किछि भूल कहूची कि तम मानु नो सर समस्त बुझुजो त मु कोन कहूची हैं तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर सर भी काली तो मु बहुत जिंस कहितबे केमती कोन करिवार अछि सब समस्त जहाँ जहाँ कही से जिन को इनकलकेट करी तुम से हिसाब से तुम निज प्रिपरेशन कर एंड रिमेंबर वन थिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डू नॉट एम्यूलेट एनीवन कि वो ऐसा पढ़ता था वो ऐसा पढ़ता था वैसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं करना यू आर एन यूनिक पर्सनैलिटी योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ्स आर डिफरेंट so find out your weaknesses find out your strength prepare your methodology accordingly rather than emulating someone make your own preparatory guidelines अरे मेरा फॉर एग्जांपल मैं टॉपर हूं मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है हिस्ट्री वीक है मैं हिस्ट्री को टाइम ज्यादा दूंगा पॉलिटी को टाइम कम दूंगा अरे तुम्हारा ज्योग्राफी बोलो तुम्हारा पॉलिटी वीक तुम्हें कौन पॉलिटी को बेसी टाइम दबोगी सो एवरीबॉडी इज डिफरेंट सो प्लीज डू नॉट एम्यूलेट दिस टॉपर ये वो ये बिल्कुल भी नहीं द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रिपरेशन ड्यूरिंग आवर पीरियड इज दैट वहां उस टाइम में सोशल मीडिया उतना नहीं था हम लोग ये सब से बच गए सो वी प्रिपेयर्ड दैट इज ऑल वी न्यू आम पढ़ारे व्यस्त रही गलु तो पढ़ी लेलु भाई से आज हम लोग फालतू चीजों में ध्यान नहीं लगाए आज का डेट रे इतने गार्बेज अच्छी दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट एवरी वन ऑफ यू ठीक है लिखी दला दीटा रोटेशनल एंड टाइटल रेडियो एक्टिविटी ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलोगे यस हाउ विल वी डिफाइन रेडियो एक्टिविटी सर tidal friction का आपने डिस्कस कर दिया tidal friction is defined to be the frictional process associated with the asthenosphere wherein due to the heat the magma interacts with the layer above and below it and below it resulting in heat transfer
and this heat in its attempt to escape 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 results in results in results in कौन एंडोजेनिक फोर्स यस अब मुझे बताओ ये वाला रेडियो एक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे यस आई कैनॉट हियर यू मैं जो रखो she is saying emission of radiation. Okay, सुनो, let us, I do not know science, I have no idea about science, I'm from arts background. Okay, how will I define it from somebody who doesn't understand? She is saying emission of this, that, this, chalo chhod diya main usko. It is transformation of one element into another element. एक एलिमेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है with the release of heat energy. That energy is heat energy. या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इट कैन बी एनीथिंग. तो एक एलिमेंट अपने आप को ऑप्टिमम कंडीशन माने कौन गोटे टेम्परेचर हेले under certain temperature it will transform itself to another element. When it will transform itself to another element, it will release heat. That heat will again want to escape and result in the manifestation of ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କଣ କରିବି? Write down for radioactivity is the process of transformation of an element under optimum condition under optimum condition under optimum condition with the release of with the release of with the release of heat. This heat when attempts to escape it results in
the manifestation of endogenic forces. How many of you understood the entire endogenic process as a concept? Just tell me yes sir. Yes sir बोलने से मुझे सुनाई देता है. Very good. So all of you understood. और कितना क्लैरिटी में तुमको चाहिए बताओ. बुझी पारलो? So this will be our methodology. This will be our standards of teaching. हम ऐसे पढ़ाएंगे, आप उसको रेसिप्रोकेट कीजिए. दैट इज ऑल. ठीक है. सेठू आकांक्षा मते पचारे सर आपण कहि तो देले कि इट इज कौन सेटा कहती, इट इज द हीट responsible for एंडोजेनिक फोर्सेस. फिर सर आप मुझे ये भी बताइए सर एक्सोजेनिक फोर्स का क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सोजेनिक फोर्सेस? बताओ. है बाहर वर्षा होची. अच्छा एसी. ओके. हाँ केमिति कहबा हमें एक्सोजेनिक फोर्स कहले हमें डिफाइन करथिले कोन? इट इज नथिंग बट emanation of the forces from the exterior of the earth. Yes. तो उसके पीछे कारण क्या है? What is the reason? हाँ. Anyone? अच्छा से तमे एंडोजेनिक फोर्स से पढ़ी देला. एंडोजेनिक फोर्स मैनिफेस्टेशन कौन बोले हो? एग्जांपल्स volcanism, earthquake, mountain building. हाँ माउंटेन बिल्डिंग. माउंटेन बिल्डिंग. हाँ ना नहीं. कॉन्टिनेंट बिल्डिंग. ये सारी चीजें आपके लिए कैसे किस लिए बनती हैं? तो माउंटेन गुड़ा जो बिल्ड होची तो माउंटेन केमिति बनिला? को प्लेट? मु प्लेट प्लेट किसी जानी नहीं. व्हाट प्लेट? व्हिच प्लेट? आई हैव नो आइडिया. मुझे बस फोर्सेस के बारे में अभी पता है. तुम तो कोई आगे तब आगु आगु पढ़ी देछ. मु आई हैव नो आइडिया. सो धर प्लेट भी होचंदी. प्लेट रो भी कारण कोन सेटा कोन एंडोजेनिक फोर्स. खाली प्लेट बाडे हेले माउंटेन बनेनी. देयर आर अदर रीजंस आल्सो. बुझ पाला विनय? There are other reasons also. There will be other reasons which we will learn with due course of time. तो बात वही है कि जब हम माउंटेन बिल्डिंग हो जाता है उसका कारण भी यही हीट. काकू टेकी ठिया कर देला, काकू गळेई पकेइला, कोटी फटेई देला, कोटी अर्थक्वेक हे गला. बुझ पालो? तो ये सब किसके लिए होता है? एंडोजेनिक फोर्स के वजह से. ठीक है. तो हाँ हम एक्सोजेनिक पे गए थे. एक्सोजेनिक किस लिए होता है? विनय को थिंक एंड टेल.
Excellent. Who is this? Subhashri. Subhashri, what do you do? कला मंदिर खाली शुभिला मते आउ कि शुभिले जोर रे कहूनु where Kalahandi. Okay, what do you teach? Okay, very good. She's correct. It is the sun which is responsible for exogenic force. Feminist will come. Why sun, sir? Why not daughter? Why only sun, sir? शुण एबे मु तुमको एग्जांपल दूची, इसको अच्छे से समझो. आमे पढ़िले एंडो एंडो पाई आमे पढ़ले हीट हला, एक्सो एक्सो पाई भी हीट, पर को हीट external heat, सोलर. ओके, तो सुनो विनय एबे गोटे जिंस कहले कि सर माउंटेन बिल्डिंग तो सर ए सब जिंस पाई गोटे देखो एबे गोटे प्लेन अछि, ए हीट जो भितरु आसिला से गोटे पहाड़ बनै देला. सो इट इज वेरिएबिलिटी डेवलपर. Endogenic forces are known as what? Variability developers. They create variation on the ground. कोटी पहाड़ बनेला, कोटी फटेई देले, कोटी कोन हैला. So everything is done because of endogenic force. So we call this as variability developer. सुबुनी कौन है कौन कौच शुभुनी? हाँ गोटे पहाड़ बनिला भाविनी तो सेटा गोटे प्लेन सरफेस ऊपर गोटे वेरिएशन ना नहीं, आइडियली तो प्लेन हवा कथा. सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरिएशन. भाविनी गोटे पहाड़ बनलानी, एटी गोटे फटी गोटे फ्रैक्चर जोन बनै देला, फाटी की ये हे गला. अगेन इज इट नॉट अ वेरिएशन? सो दैट इज व्हाई एंडोजेनिक फोर्सेस आर नोन एज व्हाट? वेरिएबिलिटी डेवलपर्स. हर पाप का एक बाप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दादाजी. तो वो दादाजी कौन है? तू वेरिएशन कर दिया, मैं तेरे वेरिएशन को खत्म कर दूंगा. तो वो क्या करेगा? एटी वर्षा करेगा, वर्षा करेगी याकू इरोड कला इरोड कला इरोड करा इरोड कला ए मालटा एटी पकेला. यस, तो टोटलटा फाइनली किछि वर्ष पर कोन हे जीवो? प्लेन हे जीवो. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस आर नोन एज लेवलर्स. बुझी पारला? सो एंडोजेनिक फोर्सेस आर वेरिएबिलिटी डेवलपर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस आर लेवलर्स. तो एक आपके लिए वेरिएशन क्रिएट करता है, दूसरा उस वेरिएशन को खत्म करने की कोशिश करता है. लिख लो, एंडोजेनिक फोर्सेस. हाँ 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 शुभुनी शुण ओडिया लैंग्वेज रे कहूची, तमरो भाबिनियो गोटे प्लेन अछि, गोटे प्लेन ऊपर गोटे पहाड़ बनीगला, सेटा गोटे वेरिएशन हैला ना नहीं? तम मुह पूरा प्लेन अच्छी, गोटे पिंपल उठीगला, से पिंपलटा कौन? गोटे वेरिएशन. कौन झिया बुझला नहीं? से पिंपलटा को हटेगा तो कौन लगेगा? फेस वॉश, नीम फेस वॉश तुमने लगा दिया तो वो पिंपल चले गए. से नीम फेस वॉशटा कौन हबो? एक्सोजेनिक फोर्स, सेटा लेवलर. से जोटा थिला प्लेन सेटा आउ थरे प्लेन करिया चेष्टा करिवो. बुझ पालो? तो एक्सो एंडोजेनिक फोर्स सब बेले तम पई गोटे वेरिएशन क्रिएट करिया चेष्टा करिवो, आ सेही वेरिएशन टा को सारीबा पई किए कोन करिवो? एक्सोजेनिक फोर्स काम करिवो, आ से सेटा को लेवल कर दबो. राइट डाउन. एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस endogenic forces
endogenic forces are variability developers, whereas exogenic forces are levelers. Exogenic forces are because of solar energy, which manifests itself as erosion, transportation, कौन कहूली भूलीगली solar energy manifests itself as exogenic forces, हाँ को भलिया in the form of erosion, transportation, and deposition. Okay, clear? सरी गला के किछ कहूछ कि किछ कहूछ कि मते मते माउंटेन खाली सुबुची जोर रे न कहले बाबा मते किछ सुबु नाही सुबुनी मते तम पछरे किए अछंती कि तमे कथा हो आ दीटा वॉइस मते सुबुची सेटा एबे हमर पढिबार नाही हमें परे पढिबा सेटा हमें पढिबा तमे जानो कि से जो हीट ता तळु बाहरुची सिए गोटे माउंटेन बनै पारिबार क्षमता रखुची तो सिए धर बनै देला कि फटै कि गोटे बड़ गैप क्रिएट कर देला गोटे बाहरुची गोटे जिंस से किछि भी करि पारे वोल्केनिज्म कर देला समझ रहे हो तो इट कैन बी एनीथिंग प्लीज म्यूट योर फोन ओके तो कुछ भी मैनिफेस्टेशन होता है एनीथिंग दैट इज मैनिफेस्टेड बाय द एंडोजेनिक फोर्स inherently inadvertently will be leveled by the exogenic force. So every topography, every जो जिनस गुड़ा तुम देखुच it is basically a battle between endogenic force and exogenic force. आज अच्छी तुम जो देखुच आमर जो एठी देखुच एठी जेती पहाड़ अच्छी आमर एटा कोन ईस्टर्न घाट्स बहुत पुराना मे बी द ओल्डेस्ट इन इंडिया बुझ पालो किंतु एबे याकर हाइट पूरा कमी जाइए कहीं एते वर्ष हेलानी याकर वेयर एंड टियर इरोजन वेदरिंग एगुडा हे याकर हाइट कमी जाइए हिमालय हाइट एबे भी बहुत बड़ कहीं से माने नुआ जवानी में जोश बहुत रहता है हिमालय का भी वही है ये लोग बूढ़े हो चुके हैं कौन अरावली तुमरो ईस्टर्न घाट
तुम देखियो ईस्टर्न घाट रो रेमनेंट्स अछि एबे टिके आगु पळोनो डेरास पाखु पळा छोटे छोटे पहाड़ अछि दे आर ऑल रेमनेंट्स ऑफ योर ईस्टर्न घाट एटा लास्ट पोर्शन ऑफ योर ये तमे एटी धौली पळा बस ता आगु को आगु ना इट्स ऑल प्लेन चंडीखोल के जण जाइछ चंडीखोल साइड रे देखियो रोड साइड रे देखियो बड़ बड़ पहाड़ थी इट्स ऑल तो घर कोठी चंडीखोल अरे वाह जारका जारका रे रोज घर माने समस्त रोज जारका रे ओके ग्रेट तो देखो आसपास किंतु तुम जते बळे एई पटरु गला बळे राइट साइड को देखियो किछि पहाड़ मिलिबेनी काई इट इज ऑल प्लेन लेफ्ट साइड को देखियो धर तुमको किछि किछि मिले so try to analyze I am introducing you to another term anybody asking anything relief ये रिलीफ क्या है जी सर एबे हम गाँ रे बन्या आइतला सर ऊपर चूड़ा पकैतले सर दैट वी विल कॉल इट एज relief is it how will you define relief yes how will you define relief related pura related I am teaching everything in line no relief of the earth means it is the distance between the highest point on the earth to the lowest point on the earth. The highest point on the earth is Mount Everest, almost 9 kilometers, and the lowest point is Mariana Trench in Pacific Ocean, around 11 kilometers. So total केते हबो हमरा ये total केते 9 plus 11 20 kilometers. That is the relief of the earth. इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ सेकेंड ऑर्डर रिलीफ थर्ड ऑर्डर रिलीफ है फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ सेकेंड ऑर्डर रिलीफ एंड थर्ड ऑर्डर रिलीफ केमिति डिफाइन करिया गला फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कोन सेकेंड ऑर्डर रिलीफ कोन थर्ड ऑर्डर रिलीफ बोलो जी सुनो I told you that the earth was formed in 3 layers. It had nickel ferrous. This was cement. Layer. This had another differentiation. याको भितरे भी गोटे डिफरेंशिएशन रहिला जे जो क्रस्ट टा हमर बनला ऊपर लेयर टा ता भितरे भी डिफरेंस रहिला इन द बेसिस ऑफ डेंसिटी जहार लो डेंसिटी रहिला से बनिगला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहार बेसी डेंसिटी रहिला से बनिगला ओशियनिक क्रस्ट रहिगला कोन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैला तो जेतल क्रस्ट टा बनिला जहार लो डेंसिटी रहिला सेटा बनिगला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जार हाई डेंसिटी रहिला दी जन को भितर सेटा को हमें कहबा ओशियनिक क्रस्ट तापरे कोन हला वर्षा हला वर्षा हला वर्षा हला वर्षा हला करके एटा पानी भर्ती गला बुझि पान एटू नदी बहिला स्टार्ट हला वर्षा हेगी तो सी ता भीतर जाई पके 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 पानी ऐसे ओशन बने तो जब अर्थ बना था थोड़ी ना पानी था आपके अंदर इट्स बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन्स व्हिच वर क्रिएटेड आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के बाद ही तो बारिश होगा बुझी पाटला तो this became continental crust, this became oceanic crust. So at the beginning of time what did you have? Only continental crust and oceanic crust. So these are the first order relief feature which were created at the time of the formation of the earth. Okay, great. Write down. I got a diagram ta banai diyo.
आउ क्लास अच्छी कि यापर ए गोटे तो सकाळे कौन क्लास थला नथिला sir. तमर तो नहीं एमान करथला ये भी क्लास करछि सकाळे Late ରେ family. अच्छा हाँ वेरी गुड करो 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 जेते करछो करो ओके लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर are those features which are formed at the time of the formation of the earth, namely continental crust and oceanic crust. Koji, first order relief features are those features which were formed at the time of the formation of the earth, namely the oceanic crust and the continental crust. ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କି there was differentiation on the basis of density. Similarly crust भितरे भी तमरो किछि dense material रहिले किछि less dense material रहिले जोटा less dense material थिला सेटा ऊपर रही गला सेटा continent बनी गला जोटा more density material थिला सेटा तळगु पळा सेटा oceanic floor बनै देला तापर वर्षा पत्र हैला भर्ती हैला सीता तार जेमिति बनिया कथा से बनिला आ बुझि पारलो बुझी पारछो तो किछि कंप्लेन नहीं तो हैं आउ आउ आ तुमको आज बनी केते मिलियन ईयर पुराना तुम ये समुद्र पानी आसला कौटू भगवान आसिक अच्छा आई विल टेल यू अ स्टोरी सुनो क्रिश्चियंस मुस्लिम्स ज्यूज दे थिंक दैट अल्लाह आए अल्लाह बनाए अल्लाह चले गए 6 दिन भितर से बनई जाइछन सातवें दिन जीव लोग अपना एक फेस्टिवल बनाते हैं जिसको बोलते हैं यम किपुर से तो कई काम करते हैं क्योंकि अल्लाह उसी दिन निकल लिया ऊपर भाई और काम नहीं करना है मैंने अपना बना लिया तो से दिन जीव माने काम करते यहाँ कहते कैटास्ट्रोफिज्म व्हाट डू यू कॉल इट कैटास्ट्रोफिज्म से गोटे आ गोटे लोक आसला जहाँ ना था जेम्स हटन से कहला बेकार बात है ऐसा नहीं हुआ मैं बताता हूँ कैसे ही टोल्ड द फोर्सेस विच वर एक्टिंग यस्टरडे आर एक्टिंग टुडे एंड विल एक्ट टुमारो से फोर्स मानकर इंटरप्ले जोगु ही जहाँ बनवार अच्छी सब बनी दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म सो एटा कहते कैटास्ट्रोफिज्म एटा कहते यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है तो एटा कहते सेमेटिक रिलीजन जो मान सब एशिया रो जति रिलीजन बाहर दे वी कॉल देम एज सेमेटिक रिलीजन्स मोस्ट ऑफ द सेमेटिक रिलीजन्स बिलीव दैट एमिति धड़ किनी बनी जाइछि आई एम गोटे लो ये माने कहले कि ना वैसा नहीं है ठीक अच्छे तो आपके लिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन गया आपके लिए ओशन फ्लोर बन गया तो अब आपके लिए एंडोजेनिक फोर्स भी काम करेगा आपके लिए एक्सोजेनिक फोर्स भी काम करेगा एंडोजेनिक फोर्स काम करके लेट्स से एक माउंटेन बन गया है तो वेरिएशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऊपर है आउ गोटे वेरिएशन है दैट वी विल कॉल इट एज सेकंड ऑर्डर all the relief features created due to the action of endogenic forces are known as second order relief features. Write down all the relief features formed due to the action of endogenic forces are known as second order relief feature.
ओके तापरे कौन है ये पहाड़ बनीगला वर्षा है वेदरिंग है इरोजन है से मालटा बाहर के आसिक ये जमा है धीरे 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 ता तले जमा हवा स्टार्ट हो तो गोटे प्लेन बनवा चेष्टा कला से प्लेनटा कहार एक्शन जो है एक्सोजेनिक फोर्स जो so all those relief features formed due to the action of exogenic forces are known as third order relief feature right ये देखो गोटे पहाड़ बनी है पहाड़ रे वर्षा है वर्षा है कि इरोड है आसला 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 ये जमा है ये जमा है गोटे प्लेन बनैला ये माउंटेन टा कौन है सेकंड ऑर्डर ये प्लेन टा कौन है थर्ड ऑर्डर so every relief feature formed due to the action of exogenic forces is known as third order relief feature. I hope everybody understood every bit that was taught today or you have any problem कोई देखो मैडम गोटे पहाड़ बनी जाइए ओके गोटे पहाड़ बनिकी भाभी नियंतु ता देहरु तापरे वर्षा हेकी ता देहरु इरोजन हैला इरोजन हैला तो मालटा ऊपर खसिबो खसी जाई कोठी तो गोटे जमा हबो जमा हेकी को जगह सब प्लेन क्रिएट करियो पूरा तो सही जो प्लेन टा क्रिएट हबो सेटा को कौन कहबा हमें थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर सो एवरी रिलीफ फीचर formed due to the action of exogenic forces are known as बस हे गला धर समस्ते बुझी पारिल टिके यस बोली कहि दियो सब ऑनलाइन फेलोस पूरा सब किछि बुझी पारलो ना आज रो क्लास ना किछि डाउट वेरी गुड 5 मिनिट टाइम अछि धर कार किछि भी जिंस अछि पचार दियो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर हैला सेही रिलीफ फीचर जोटा अर्थ रो फॉर्मेशन टाइम रे बनी थिला मु तुमको कहली कि अर्थ जतले बनिला सेतले कोन डिफरेंशिएशन हैला डिफरेंट डेंसिटी मटेरियल सबा ऊपर क्रस्ट रहिला क्रस्ट रे भी दीटा डेंसिटी रो मटेरियल रहिले जोटा लो डेंसिटी रो थिला से कोन कला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जे हाई डेंसिटी रो रहला से ओशनिक फ्लोर बनेला तो कॉन्टिनेंटल फ्लोर ऊपर आउ ओशन सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आउ ओशनिक फ्लोर दीटा बनिला केते बेले जतला अर्थ बनिला तो सेटा को हमें कोन कहबा फर्स्ट ऑर्डर ता ऊपर भाविनियो एंडोजेनिक फोर्स काम करी गोटे पहाड़ बनई देला कि गोटे वोल्केनिज्म हे गला अर्थक्वेक करी फटई देला से गुडा को हमें कोन कहबा सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर तापरे वर्षा हे कि कोटी डिपॉजिट हे कि कोटी इरोड हे कि जो जिंस गुडा बनिला खाली वर्षा नहीं हवा भी हो सकता है समंदर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जे कला से गुडा को हमें कोन कहबा थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर सर एटा जो पहाड़ गुडा को जति लैंडस्लाइड से स्लाइडिंग के जो मिट्टी जाओ नहीं लैंडस्लाइड इज नॉट एसोसिएटेड विथ दिस वी हैव अ वीडियो ऑन लैंडस्लाइड्स हमरी ये रे मुई गोटे क्लास नेतली से वीडियोटा को देखिबे एबे किस दिन पूर्व अछि इट्स ऑन यूट्यूब आल्सो यू कैन हैव अ लुक सेतर अपन लैंडस्लाइड ऊपर लैंडस्लाइड या सहित रिलेटेड नुहे मु तुम कहबी लैंडस्लाइड काहे कि होछ कार किछि आउ डाउट एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज कोई शक सवाल शंका कुछ भी हो तो बताओ क्लास भल लागिला बुझी पारलो बोर हेलनी थर को टाइम रे बुझी पारियो मते कहबो मु आउ थरे बुझाई देबी हला किंतु मु एक्सेस ओडिया ये रे कहि पारिबिनी से जिंसटा कोन कहंती टिके बुझिया को तुमे भी चेष्टा कर धर बुझी पारिबनी मु का पचार देबी तुम कहि देबी एग्जैक्टली हां के ओडे कोन कहतला को क्लास 11 हाँ पढ़ पढ़ सेती पढ़ आउ किछ पढ़िया दरकार सेती ही पढ़ भलो से पढ़ गोटे गोटे लाइन पढ़ अच्छी 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 गोटे जिनस शुण एनसीईआरटी तुम पढ़ तुम मो क्लास कर जो जिनसा सेठी नथियो से जिनसा मुझे कहीदेवी एठी तो दीटा को मिसेइबो तापर तुम ऑटोमेटिकली पूराटा ही हम उस हिसाब से पढ़ेंगे
बुझ पाला एफर्ट्स दोनों देंगे, दोनों पढ़ेंगे, दोनों समझेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आउ किछि एनीथिंग एल्स? ठीक अछि, वेरी गुड, बुझी पारलो धलो। हाँ हाँ आउ कोन आज इंट्रोडक्शन दियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हला। या परे हमर अछि एंडोजेनिक फोर्सेस ऊपर थियरीज अछि। गोटे सी फ्लोर स्प्रेडिंग अछि, गोटे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अछि, तापर धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स अछि। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली थियरीज ऑन एंडोजेनिक फोर्सेस। बुझ पाला? आउ आज तो मु काफी जिनस तुमको लिखेइछि भी, लिखेइछि ना, तो ये इसको रफ मत समझो, ये आपके लिए पोथी है। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। हाँ।